नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। मैं हूं एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। हम दोनों हैं नेशन नाउ पर और नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ। सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए जो हुई है पिछले 5 सालों में कि श्रीनगर में और पुलवामा में, जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में 30 बरसों के बाद, 30 साल के बाद, आफ्टर 30 इयर्स सिनेमा हॉल खुल गए हैं। जहां सिनेमा हॉल खुल गए हैं, सिनेमा थिएटर खुल गए हैं। इसके पहले जितने भी वहाबी मेंटालिटी के, जितने भी वहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्होंने जान करके जबरन सारे सिनेमा हॉल बंद करा दिए थे। उन्होंने ये कहा था कि ये शिर्क है, ये कहा था कि ये एंटी इस्लामिक है। असल में इंटेंशन नहीं था, इरादा नहीं था कि ये एंटी इस्लामिक है। इरादा ये था कि हिंदुस्तान के साथ जितने भी कनेक्शन है वो काट दिए जाएं। ये था कि हिंदुस्तान की अगर फिल्में, बॉलीवुड की फिल्में अगर श्रीनगर में, जम्मू एंड कश्मीर में दिखेंगी तो ना जाने कश्मीर के लोगों का जो प्यार है हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान के लिए, अपने देश के लिए, वो ज्यों का त्यों कायम रहेगा। इसलिए बॉलीवुड को ही खत्म कर दिया जाए। प्रदीप जी, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। बॉलीवुड की सारी फिल्में बैन कर दी गई। और आप जानते हैं 1989 से लेकर के आज तक किसी ने भी कोशिश नहीं की कि एक बार फिर जम्मू एंड कश्मीर में सिनेमा हॉल्स फिर खोले जाएं। ये पहली बार ऐसा हुआ है। एंड आई मस्ट कंग्रेचुलेट द गवर्नर, ऑफ कोर्स द लेफ्टिनेंट गवर्नर, दैट इज now because Jammu and Kashmir is a union territory, it is no longer a state, and of course Mr. Amit Shah and the Prime Minister Mr. Narendra Modi himself. आर्टिकल 370 और 35A की रिपील के बाद ये तो होना ही था, और ये क्योंकि कर दिया गया है। I hope even the opposition parties, I hope even the non-BJP parties will have it in themselves to congratulate the government for what they have done. लेकिन सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा प्रदीप जी। इसमें आपको अब जम्मू एंड कश्मीर में शूट करने के लिए सब्सिडी देनी पड़ेगी। फिल्म यूनिट्स को आपको इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे कि आपको स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं है, न्यूजीलैंड जाने की जरूरत नहीं है, हॉलैंड जाने की जरूरत नहीं है, फ्रांस जाने की जरूरत नहीं है। आप कश्मीर में आइए। और सीधी सादी बात है, मेरी समझ में कश्मीरवादी जो है वो स्विट्जरलैंड से ना जाने कम से कम 100 गुना ज्यादा खूबसूरत है। एक जमाना था हर दूसरी फिल्म, हर तीसरी फिल्म कश्मीर में शूट होती थी। याद है शमी कपूर, शशि कपूर, जॉय मुखर्जी। अरे भाई, या श्रीनगर में, या पहलगाम में, या गुलमर्ग में, ये तीनों जगह थी जहां पर हर हिंदी फिल्म की शूटिंग हुआ करती थी। फिर उसके बाद ये दौर आया, ऐसा लगने लगा प्रदीप जी कि भारत सरकार ने यह तय कर लिया हो कि कश्मीर को उसके हाल पे छोड़ दो। ये तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह वापस आए 2019 में, और 2019 में उन्होंने कहा आर्टिकल 370 रिपील होगा, 35A रिपील होगा। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा। एंड दिस इज रियली in the various steps that have already been undertaken to see to it that Jammu and Kashmir is freed from the hold of the 5 mafia families. जो 5 माफिया फैमिली थी जम्मू एंड कश्मीर की, जिन्होंने अपने शिकंजे में पकड़ के रखा था, जकड़ के रखा था जम्मू एंड कश्मीर को और उसके आवाम को और उसकी आबादी को। ये एक और कदम है कि उनका जो होल्ड है अब धीरे धीरे बहुत कम हो रहा है। बहुत ही जल्द आप सुनेंगे, जोर जोर से चिल्लाएंगे ये लोग, दर्द से कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, ना जाने क्या कुछ कहेंगे कि फिल्में नहीं दिखानी चाहिए, सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन याद रखिए, अब तो
जो विकास का मार्ग पकड़ लिया है जम्मू एंड कश्मीर ने, अब तो वो वापस नहीं होता है। अब तो जय हिंद है हर जगह पे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। अब भारत को कोई नहीं रोक पाएगा, याद रख लीजिए। प्रदीप जी। Sir, as you said, Article 374, 370 repeal, 355A निकालने के बाद, he didn't stop the 35A. Modi never stopped there. He brought development into Kashmir. There was an influx of population. बाहर के लोग आके रहने लगे. There was intermingling of dialogues, intermingling of culture में intermingling and business, trade, commerce में जो जिस प्रकार से intermingling होने लगा. So that changed the entire thought process of Kashmir. And you said the most important, जो mafia families थे, mafia families को mainstream से उसने अलग कर दिया है. He said, we carrot and stick, no place for terrorism, hard dealing with terrorists. At the same time, if development has to take place, development take. He had every highways across, railways across. I mean, इतना development कभी कश्मीर में देखा? If you see the highest railway bridge in the world. Yes, exactly, the highest railway bridge in the world. The highest, that's what I said. Mr. Modi never stopped at the political angle of 370, 35A के बाद रुका नहीं है. There was continuous phase in of development. Development के जब लगातार उन्होंने उसमें traverse लेके आया है. He says the highest railways facilities, commerce. आज के तारीख में जो आप कहा कि what is remaining is subsidies किस प्रकार से दिया जाए. जी. After repeal of the Article 370-35A, what we saw, what Mr. Modi did was the entire process of issuing domicile certificates to everybody. Yes. लाखों domicile certificates जो बाहर के लोग थे उनको देने शुरू कर दिए. So that changed the entire trend and intermingling of अलग-अलग लोगों के अलग-अलग intermingling of culture, give and take चालू हो गया. Delimitation जिस प्रकार से किए. जी. मेजॉरिटी एरियाज को तोड़ ताड़ के उन्होंने एक एवरेज कॉस्मोपॉलिटन वातावरण क्रिएट करने की कोशिश की है. एंड आफ्टर दैट व्हाट वी सॉ वाज ही अलाउड पीपल फ्रॉम आउटसाइड टू बाय प्रॉपर्टीज इन कश्मीर. और प्रदीप जी, यहाँ पर सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार ही नहीं है, सब केरल से, तमिलनाडु से, कर्नाटका से, हर जगह से लोग पहुंच रहे हैं वहां पे, नॉर्थ ईस्ट से. एग्जैक्टली जी. और फिर एक वेव की जो प्रॉपर्टीज अटैच हुआ था हिंदू प्रॉपर्टीज को, जी, उसको एक कानून के तरीके से उसको रद्द करके, आई मीन एक डायलॉग लेके आए प्रोसेस दैट द कश्मीरी पंडित्स कैन गो बैक. एंड देयर वाज एन इन्फ्लक्स ऑफ कश्मीरी पंडित्स बैक. यस. दो देयर वाज सम अटैक्स ऑन सम stray attacks here and there, but mostly the Kashmiri Pandits have returned to Kashmir Valley. Yes. They've come back. They've come back to take their properties, come back to take over the properties. So the entire process didn't stop at one place. He went on a continuous. प्रदीप जी, एक चीज जो आपने बात कही बिल्कुल दुरुस्त कही है. अब यहाँ पर आपको याद दिलाना पड़ेगा अपने दर्शकों को, रिपील ऑफ द रोशनी एक्ट, जिसके तहत जो कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टी थी वो अब्दुल्ला साहब ने वहां के लोगों को दे दी थी. जी, बिल्कुल. So all these things brought in confidence instilling, though there were minor incidents of stray killings of people from outside the state who had come there, but that never deterred the spirit of the people already out there in Kashmir to stay back, work, earn for themselves, and change the entire facade, the way people thought, the thinking process or business boom. Because unless there is intermingling, unless population traveling in and out of a particular state, you cannot have development. You cannot have commerce, business and commerce. उसका हो ही नहीं सकता जब तक आप इस चीज को अलाउ करो. You see this part of Kashmir, the Indian occupied Kashmir, and you see the Pakistan occupied Kashmir. और Pakistan occupied Kashmir आज भी जंगल एरिया है, जाहिल है. There is no development at all. लोगों के सोच प्रोसेस, थॉट प्रोसेस भी वो है. And look at this part, everywhere schools. यहाँ पर schools है, colleges है, communication है. एक मिनट मैं क्लैरिफाई कर दूं. प्रदीप जी ने कहा इंडियन कश्मीर, वो गलती से मुंह से निकल गया. इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, इंडियन कश्मीर. जी. और वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो भी इंडियन कश्मीर ही है, बहुत जल्दी आ जाएगा. बिल्कुल. So what we are trying to say is that development where Modi has laid his hand on, Modi's जहां पर मोदी के रूल है वहां पर डेवलपमेंट है, उन्नति है, प्रॉस्पेरिटी है, लोगों के तालमेल है. देयर इज ऑलवेज business going on, booming, infrastructure, development, education, colleges, you name it, investment. And what is in the other part?
of Zero, nothing. Zero. There is nothing. यही वहां के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में यही चल रहा है कि वहां पर देखिए कश्मीर में क्या हो रहा है और हमारे पास स्कूल भी नहीं है किलोमीटर दुरुस्त बात और यहाँ पर IIT और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन रहे हैं वहां पर और वहां पर 50-50 किलोमीटर के दूर पर एक भी स्कूल नहीं है ऐसे हालात है उस कश्मीर में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तो दिस इज व्हाट लीडरशिप चेंजेस ब्रिंग अबाउट व्हेन यू टॉक अबाउट अ स्टेट्समैन he doesn't politics is an integral part of statesmanship but your job doesn't stop where you bring in politics you are bringing in governance you're bringing in rule of law you're bringing change you're bringing prosperity this is what leadership is all about reservations and yes and the old reservations जिस प्रकार से पूरे all those things are repealed कि बाहर के लोग इधर आएंगे सिर्फ साफ सफाई के काम करेंगे और इसी को तो all things have changed ये जो माफिया फैमिलीज है अब्दुल्ला महबूबा ये सब आज के तारीख में they have become history yes they have become history now गुलाम नबी आजाद जिस प्रकार से वहां पर काम कर रहा है मोमेंटम कर रहा है whatever happens politics taking its own seat but you talked about development the cinema halls opening after 30 years is a great thing for the entire it shows the mindset of the people of Kashmir they want to change one is infused change one is when the people themselves believe that change has come and we need to change for the good for public welfare and the future of our generations and that has gone into every Kashmiri right now that we are integral part of India we are with development we are with this kind of leadership that allows development to prosper and that is what Modi has shown it now if you time that along with what is happening in Maharashtra थोड़ा आप देखो because Maharashtra headlines are the most important thing that शरद पवार का नाम लीक हो गया पत्रावाला स्कैम में they want investigation against Patrawala they want investigation of Sharad Pawar because in the statement of Sanjay Raut and ED has found out that there were various meetings between Sharad Pawar Vilas Rao is not there anymore and Sanjay Raut so this continues just प्रकार से अतुल भातखलकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोले कि the Sharad Pawar has to be investigated. The BJP Maharashtra president, Bhavan Kule says that Sharad Pawar needs to be investigated. Now, what is this? Is this some pressure tactics? As you said, Eknath Shinde group together with the BJP, if they are, they are not. Because they want to do the expansion on Dussehra day, probably. तो दशहरे के दिन के बाद कुछ होगा, नहीं होगा, लोग जुड़ेंगे, टूटेंगे. इसके लिए, you got a standby operations. You got to standby operations where Sharad Pawar under pressure and Ajit Pawar is always, as it is on both sides, talking very nicely. And Ajit Pawar, after this particular incident, probably within the party, he'll have much more power and much more grace in whatever he does. But a lot of things happening in Maharashtra. Just प्रकार से आप देखोगे, the biggest challenge for the Uddhav Thackeray is to have the Dussehra Melava. If the Dussehra Melava doesn't take place, which is just 2 weeks away now, and permission has not been granted. And permission has not been granted, whereas the Shinde group has already started the entire operations in Bandra Kurla complex where they are going to have the Dussehra Melava. And many of these leaders, small-time leaders saying that probably Uddhav Sena will have to see online Dussehra Melava from their homes because things are not going to happen. So these things are happening here. It's happening, but is it good for democracy? As Supriya Sule says, it's bad for democracy. Because Dussehra Melava belonged to the Balasaheb Thackeray and his legacy with Uddhav Thackeray, what Supriya Sule believes, then that the Eknath Shinde, the chief minister, should be more gracious and allow that thing to happen. The same sentiments was echoed by Sharad Pawar. He said, Uddhav Thackeray should be given, he has got the right to Shivaji Park. Uddhav Thackeray has got the legacy of the Dussehra Melava. There is no such thing as a divine. there is no, that's the point. There is no such thing. But Sharad Pawar says, rightfully, it belongs to Uddhav Thackeray, so he should be given it. Eknath Shinde can have it, but Eknath Shinde can have in BKC or whichever other locations that you want to. Now, it's very tough for the MVA to leave Uddhav Thackeray at this particular moment because right now, nothing seems to be going right with Uddhav Thackeray. कोई चीज नहीं है जिस प्रकार से रामदास आठवले I think we could never expect some things years before if anybody could utter such things about the Thackeray family. Ramdas Kadam. Yes, Ramdas Kadam. Not Ramdas Athawale, Ramdas Kadam. Yeah, Ramdas Kadam. Yes. Ramdas Kadam जिस प्रकार से
whatever language he used against Uddhav Thackeray, why does Uddhav Thackeray has to keep on reminding that he is the son of Balasaheb Thackeray? Does he? Now, second part, as we said, is very controversial. We can't talk about we can't talk about that. But the point is, nobody believed that Shiv Sena could come to such a sticky end or standstill or wherever it is, that they don't have people to retaliate to this kind of an offensive launched by people from their own party. I don't remember even Balasaheb Thackeray के समय किसी की हिम्मत होते कि ऐसे बातें करे या उच्चार करे किस प्रकार से. Nobody, not out of respect, nobody would have done it. But things are not going. Was it betrayal? When Raj Thackeray yesterday, day before yesterday, in his Nagpur Yatra, completely, continuously reminding the people that when he was along with Balasaheb Thackeray and when they was always sitting in formal meeting among the alliance partners, it was a written rule or unwritten rule that party having more MLAs will have the chief minister. And the other party will have the deputy chief minister. Yes, yes. So he said, what has changed? It shows the greediness, the want to be the chief minister of the state, or whatever reason. He blames Uddhav Thackeray for it. He blames Uddhav Thackeray directly, indirectly, saying that this was against the entire system built up by Mahajan, Munde, Balasaheb Thackeray. They had great conventions before them. They didn't have to fight. Nobody fought for all these things. It was understood among themselves. So, Uddhav Thackeray right now is surrounded by everybody. You got Eknath Shinde down his throat. You got Raj Thackeray down his throat. BJP as it is. Sharad Pawar not in support the way he should be. Because the entire thing happened because he possessed great faith in Sharad Pawar. As Sanjay Raut, who's right now inside, always believed that Bhishma Pitama, Sharad Pawar is a Bhishma Pitama, and he will cater and take care of all problems that befalls the MVA. But he just couldn't see what was happening. Sharad Pawar also failed to see the entire movement from here to Surat and from Surat to... So everything, how the breakup of the MVA government, with the Home Ministry with them, they couldn't preempt it, they couldn't do anything to contain it, they never, even in their wildest dream, thought that they would break and so break so miserably and to break away from the family. Now again this whole thing happens. This is going to be a classic example. Is the Shiv Sena going to sustain without the Thackeray's? If this becomes a rule, if it happens, then the same thing might be happening to the Congress. Yes. The Congress without the Gandhis. Yes. But right now the working president, Shashi Tharoor, you got Gehlot, everybody saying that we want to be a president of the Congress, Indian National Congress. So something's working out there. But now are we seeing these kind of developments that shows that family name will not decide the party? If Eknath Shinde sustains for 2.5 years and after that, it will be great victory for the democratic process. Will it be that party can live beyond families? Any family. Yes, that's right. Most important. Regional parties, everybody has got a family affiliation. Without them, there can be no party. There can be no Shiv Sena, people believed, without Thackeray's. There can be no NCP without the Pawars. There can be no DMK without Karunanidhi's family. They can, same with Yadavs in Bihar and UP. And the RJD. And the RJD. So are we seeing the breakup of these, inbuilt principles in politics that family, dynastic politics is a compulsion. It can't last without dynastic politics. The family business will be there. As the BJP calls it, a family business, the business of family. But is it going to sustain? This is going to be the greatest show. How Eknath Shinde Sena will they allow the Dussehra Melava-Uddhav Sena to happen? If it happens, it could be out of graciousness of Eknath Shinde, because he being a CM, he allows it to happen. He can also refuse it to, see that it doesn't happen. At the same time, how is he going to sustain? If he sustains for 2 years or 2.5 years from here, it will be a victory for the democratic process of the country. And hope it happens like that. So we find there will be change. Congress without the Gandhis, Sena without the Thackeray's,
You got Pawar's NCP without the Pawars. Will it happen? I hope it does. Very frankly, as you said, it's very good for democracy. जनतंत्र राज्य के लिए इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है कि परिवारवाद किसी भी पार्टी में ना हो। परिवारवाद जब किसी भी पार्टी में होता है तो वो जनतंत्र राज्य के लिए, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं। वेरी फ्रैंकली, जैसे हमने 5 माफिया फैमिली की बात करी, वो अपने आप को पॉलिटिकल फैमिली कहते हैं, लेकिन मेरी समझ में ये 5 परिवार हैं जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को प्रोग्रेस नहीं करने दिया, हेल्प्ड ऑफ कोर्स बाय द पीपल इन दिल्ली। आज की तारीख में जिस प्रकार जम्मू एंड कश्मीर की इंटीग्रेशन चल रही है बाकी भारत के साथ, अगर यही चीज 30 बरस पहले या 40 बरस पहले हो जाती तो आज की तारीख में कोई वहां समस्या ही नहीं होती। और यहां पर जहां तक महाराष्ट्र का प्रश्न है, ये तो लाजमी है दैट सुप्रिया सुले एंड शरद पवार जी वुड से द सेम थिंग विद रिगार्ड टू मिस्टर उद्धव ठाकरे, बिकॉज आफ्टर ऑल the entire NCP is based on family pride and, you know, family heritage and family inheritance. But a churning has now started. इधर अशोक गहलोत जी की बात हो रही है और शशि थरूर जी की बात हो रही है कि हो सकता है कि इनमें से कोई भी कांग्रेस का अगला प्रेसिडेंट बने। जहां तक एनसीपी का प्रश्न है, मुझे नहीं दिखता कि एनसीपी में कोई और प्रेसिडेंट बन सकता है। जहां तक शरद पवार जी का प्रश्न है, वो तो है ही प्रेसिडेंट हैं एनसीपी के। और जहां तक के शिवसेना का प्रश्न है, आज तक जब भी शिवसेना में स्प्लिट हुआ है, शिवसेना को कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन इसके पहले जितने भी स्प्लिट हुए थे, डिवीजन हुए थे शिवसेना में, याद रखें उस वक्त बाला साहब ठाकरे जीवित थे। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद शिवसेना में या शिवसेना दो फाड़ हुई है। अब यह सबको देखना है कि उद्धव ठाकरे जी में वास्तविकता में कितना दम है, कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी है, उनके जो प्रशासकीय गुण हैं, उनकी जो संगठनात्मक शक्ति है, वो असल में कितनी ताकतवर है, यह देखने को मिलेगा अब अगले 2 साल में। और यदि एकनाथ शिंदे जी सस्टेन कर जाते हैं और सरवाइव कर जाते हैं और जिस प्रकार चल रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो और ज्यादा ताकतवर होने वाले हैं। तब तो उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे जी के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। राइट, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी हैव गॉट फॉर यू इन टुनाइट शो ऑन नेशन नाउ। जाने के पहले एक बार फिर congratulations to the Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, congratulations to the Prime Minister Mr. Narendra Modi, and congratulations to Mr. Amit Shah. A job very well done indeed, sir. After 30 years, multiplexes have opened in Srinagar. Cinema houses have reopened in Jammu and Kashmir, and that is the best news yet. आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी।